This is what it feels like when your child disappears. In India, a nationwide trade is separating children from their families. Every 8 minutes, a child goes missing in this country, and they're often trafficked. मेरा घरे वाला लोग था ना, चाचा थे, बड़े चाचा, और मेरे पापा से पूछ के लेके गए थे कि हम कितना देंगे या क्या करेंगे इस तरह से वो, और वहाँ पर जाने के बाद में कोई दाई का काम में भी चली गई, कोई ब्रोथल में भी चली गई. We uncover a complex child trafficking network in India and ask, how can this be happening? Midday in a suburb of northwest Delhi, and we're on a raid. We've had a tip-off that dozens of kids are working in bakeries here. We've been told that some children already escaped from one of the premises, but we've got a lead for another place, so we're just going there now. This operation's being led by a child protection agency who rescue thousands of children from slavery every year, working alongside the police. After 20 minutes, the first children emerge. Every year in India, around 70,000 children are reported missing. It's thought the actual number's higher, as many cases aren't registered. I've been investigating the networks behind this huge trafficking industry. This is Jharkhand, 1,000 kilometers east of Delhi. The majority of child trafficking victims come from the poorest, most remote parts of the country, like here. Poonam Topo's dedicated her life to fighting India's child trade. यहाँ जो जा रहे हैं वहाँ पर कहीं भी मतलब काम नहीं है और उसके मम्मी फादर्स मदर्स भी कुछ भी नहीं करते. There's no work. हाँ, no work. And पैसा बहुत मुश्किल, जैसे क्लोथ के लिए, एजुकेशन के लिए, बुक्स वगैरह के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स. तो इसी के लिए लोगों को थोड़ा जाना होता है, और जैसे बाहर से जैसे लोग आ रहे हैं तो ये कन्विंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग. Poonam's brought us to Jarrow, a village of just 20 families, where 14 children are currently missing. But family members themselves are sometimes involved when a child initially goes missing. जी मेरे चाचा से बात करके लेके गया था. घर में बहुत गरीबी स्थिति था, इसीलिए गए थे. हम सबसे बड़ी बहन थे ना, इसीलिए गए थे. खाने पीने का नहीं था, इसीलिए गए थे बाहर. Amrita, not her real name, was traded by traffickers at the age of 9 to a family she'd never met. Her job was to look after 2 children, aged 5 and 3. हाँ, सुबह उठना पड़ता था 5 बजे. जब कभी लेट हो जाते थे तो मिलता था डांट, पानी उनी नहीं भरते थे तो. जब कभी गलत करते थे तो हाँ, डांटती थी, 1-2 थप्पड़ देती थी. For 5 years, Amrita was treated like a slave. By the time she finally returned home, her mother had died. Thanks to Poonam's support launching a criminal investigation, Amrita's uncle is now in jail. But that's rare. Fewer than 1% of trafficking cases in India end with a conviction. Despite attempts by the government to fight the trade, it's thriving. In a nearby village, we meet another family who fell prey to traffickers. ये देंगे पैसा निकाल रहा था, खर्चा बर्चा कर रहा था, घुमा रहा था, हमको भी गाड़ी लेके आता था. हम कहाँ जा रहे हैं कि दलाल है. बहुत प्यार थे, उसका घर वाले आशा यहीं रहता था. Munsi and Suggi's daughter Sunita was just 12 when a couple befriended the family,
promising a better future for their child. तो हमको बताया कि इसको पढ़ाने नहीं सकिएगा, ये लड़की अच्छा है, लड़की को हम ले जाएंगे अपना घर तरफ और एक कभी कभी काम करके पानी उनी ला देगा और लड़की को पढ़ाएंगे। हम बोले कि ठीक है, यहाँ तो सामने है। After a month, Munsi went to see how his daughter was getting on. तब उसको आदमी को भेटाया, घर गए उसे के रूम में, तब बोला कि मेरा लड़की कहाँ गया? वो ले गया दिल्ली में, बहुत बड़ा घर में, एकदम स्पेशल पढ़ाई हो रहा है और काम भी। It's been a decade since Munsi and Suggi have seen their daughter. How much do you miss her? हमार बेटी के पहले बेटी के तो पहले तो हम कहिला कि कहाँ से देख पाबो कि नहीं पाबो से लेके बुझाइला चिंता लगा थी तो का करबो खाने खोजे जाबो मैं अनपढ़ की तो यह तो बुखार हो गेलो हम करके देखबो कि मन के बाल बच्चा मन के देखबो कतई याद लागोला बेटी नहीं याद लागो से नहीं एखन ओकरा ध्यान लगाइला तो का करबो बेटी कहाँ जाबो। According to Poonam, traffickers like the couple who took Sunita can earn up to $300 per child. It's a well-organised, multi-million-dollar system, luring children into slave labour and prostitution. But the traffickers are just middlemen, with no control over what happens next. कहा जाता है तो उनको भी लगता है कि हम गरीब हैं, हो सके निकल जाएंगे तो एक हमारा घर का भी सेफ्टी हो जाएगा, हमें भी कुछ पैसा मिलेगा। जब चली जाती हैं तो गांव से निकलने के बाद वो किसी से जाती हैं, वो अपने जान पहचान के लोगों से जाती है, लेकिन स्टेशन पहुंचते चेंज हो जा रही है, दिल्ली में ले जा रहे, दूसरा लोग ले जा रहे हैं, फिर एक इस तरह से कोठा नहीं वो प्लेसमेंट एजेंसी में बैठा दिया जाता है, वहाँ पर उसको भेड़ बकरी की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि हम कितना देंगे या क्या करेंगे इस तरह से वो। और वहाँ पर जाने के बाद में कोई दाई का काम में भी चली गई, कोई ब्रोथल में भी चली गई, और वो लड़की एक बार वहाँ से निकल जाती है वो कभी भी नहीं मिलती है। Sunita's father, Munsi, has decided to take action. He and Poonam are on the way to the police station. Do you think there's a good chance of finding her, sir? I will try. So अभी हम कैसे कर रहे हैं कि अभी हम लोग तो प्रयास करेंगे, है ना? प्रयास करेंगे। Police tried to track Sunita down in Delhi. They believe she may be working overseas for a family. As traffickers continue to exploit vulnerable families, it's hard to see a way out of this trade. For the vast majority of India's missing children, rescue remains a distant dream.